safe to keep it the least possible contact. So as I said, a complete wearing of the mask is essential. Second, not touching the front of the mask, you're just removing it with the straps and applying it with the straps again. And third, when you are taking it out, specifically at the lunch periods and time when you have to eat or something, so that time you keep it on a clean surface. When you are taking out your mask, keep it on a clean surface so that the contamination. Okay, and when you are coming to school, so the parents or maybe even the children themselves should make it sure that you are having an extra pair of masks in your bag, so that in case the mask gets contaminated, then you have an extra pair of masks available. Even the school should have extra masks and sanitizers available in the school facility itself, so that if a child wants extra mask, then it's ready. So first and foremost is the wearing of the mask. The second is hand hygiene. Again, it is this pandemic which has made us realize that hand hygiene is very important, because otherwise it's not that this was not important previously. I think also we are having a lot of communicable diseases, but this pandemic has stressed the importance of hand hygiene. So washing of hands, as they say, at least for 20 seconds. All the surfaces should be rubbed and cleaned, including the fingers, the nails, and as much hand washing that is required should be done. It's not as if just before the food or after the food that has to be done. It has to be done whenever you are coming in contact with anybody else, and the hand washing should be done. In case if you're not able to wash your hands, if you have a sanitizer readily available, then apply the sanitizer in the same manner for 10-15 seconds, rub all the surfaces. But remember, just sanitizer is not a replacement for hand. So if hand washing has to be done, it has to be done. There is no replacement or no substitute by using a sanitizer. So sanitizer is handy at times. Again, as I said, should make sanitizers available, and the children should be having sanitizers in their bag. The third thing is physical separation. In the environment of school, this has to be ensured, considering in the class when the lecture is going on, the physical separation is required, so that the setting is made that way that you have a good amount of physical separation and a good ventilation in the classroom. Second, crowded environment should be avoided. Like assemblies, obviously there won't be any assemblies, and one should not crowd in places specifically during the lunch breaks, as children do have a habit of coming in contact with each other. And no point of physical contact like shaking of hands, or again these should be avoided at this time. At least I think so for the next 3-4 months, when the pandemic will take its due to fade out. Let's hope for that, or the vaccine that does come in. Now, after all these three important measures, the wearing of mask, second, hand hygiene, third is physical separation. So now comes the responsibility, because as the citizens of this country, we always have a habit of criticizing the government that this is not being done and these things are not there, they're not trying adequate measures to control. But what are our responsibilities? So I would like to divide these responsibilities from the school point of view. So one is the responsibility of the children themselves. The second is the responsibility of the school. The third is the responsibility of the parents. So one. So from children point of view, the responsibility, as I said, avoid all kinds of physical contact, hugging, handshaking, and not being in closed environment or spaces. The second, as we all know, sharing is caring. But here, I think so it would be better if you don't share your stuff that much. Though a good thing, with time we have realized and we have learned that the virus doesn't stay too long on inanimate objects. But still, sharing should be avoided. In case it has to be done, then apply sanitizers and sterilize your hand after sharing stuff. The third thing is always carry an extra pair of masks and sanitizers in your bag. During lunchtime, when you let your guards down, when you're putting down your mask, that time keep good safe distance. Okay, when you're eating, don't be too close to each other. Keep a good safe distance. And once you go back home, make it a point that you take a shower and change your clothes and keep hygiene as primary. So these are the measures that students that we can do. Now coming to the responsibility of school. So school, what measures school needs to take is first, good ventilation in the classroom, proper separation of the students, so that the chances of communication and the chances of spreading of the disease decreases. The third would be checking of temperatures as we are doing in office. Sir, which class? Sorry. टीचर्स The third is the
I would remember the idea. The separation of the students has to be done. Checking of the temperature when the staff and the teachers are staff, the teachers and students are coming into the school. सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. Am I not audible? Is my voice audible? Yes, sir, your Slightly voice is audible, not not clearly. clearly. It's a slow Sir, you sound. are audible, not audible. Voice is not Okay, okay, okay. There must be some network problem, but sir is audible. Okay, there must be some. I hope the network problem is not from my end. Ah, I think it's the no. parent who is telling Yes, it, so they might be having a network issue. yes. There will be a network problem from that side. We are able to hear. Okay. So as I was telling, so one, a good amount of good physical separation among students, a good ventilation, checking of the temperature of the staff and the students when they come into the school. And if there is any staff or any student who is running temperature at that point of time, that person should be asked to leave the school premises immediately, go back home, get themselves consulted by a doctor. If required, get their COVID test. And in case if the another thing is that to avoid crowding in staff rooms, what happens is we have seen that the teachers also they have a habit of sitting close to each other and talking, and that's the normal norm that we used to have previously when there was no COVID-19. But now we have to take specific precautions. Then making available of masks and sanitizers in the hospital premises, in the hallways, in the washrooms, and wherever possible. And during lunch breaks, again ensuring among students that the setting is such that they have good amount of physical separation. And as I said, if anybody is running any fever or any temperature or having any sore throat for a long duration or a lot of these symptoms are suggestive of COVID disease, so that person should be asked to leave the hospital premises and get themselves consulted physically. So these are the responsibilities that the school can be taking. Again, if you are having bus services, which will be starting soon, then physical separation and distancing is required even in the buses. Now coming to the responsibility of the parents, and here I would like to emphasize that you can't expect the children to keep their masks on throughout the day if they are not practiced previously. So I would request the parents at home to start this practice that they wear the mask even when they are at home so that they get the habit of wearing mask. Even adults have an excuse saying, I feel restless, मुझे सांस फूलती है, मैं comfortable feel नहीं करता हूँ. It's about getting used to it. Obviously, we have not used mask in the past, so we are not used to it. So we have to get used to it. So we have to practice that wearing of mask at home and proper wearing. As I said, complete wearing of mask, handling with the straps, and not touching the mask in the front of the mask. Then frequent hand washing even at home. If required, it has to be done in the same diligent manner. For 20 seconds of a hand wash, rubbing all the surfaces and everything that needs to be done. And मैम क्या स्कूल भी खुल रहा है? Ma'am, let sir speak, then we will discuss. I would like to address that as the schools are not opening now, but once there will be a day that it will start with time. Even the government is considering might be after some time, and it will leave on the state governments to when it has to be started. So I'm addressing this issue. Sir, you are not audible. I'm addressing this issue specifically because of this reason, because these are the concerns that all the parents and students will be having how to do. So I'm addressing this issue considering the COVID-19 pandemic. So these are the responsibility of parents that need to be done. And again, in case if your child is having a temperature or any issue, then don't send your child in public places or school and make the child sit at home. Get him consulted, get him tested as required. Okay, because that thing is imperative that we try to limit the communication, the spread of this disease in the community. To get the child tested, in case if he comes out to be positive, then let the child be at home, the parents also be quarantined, and the direct contact of the children should also be contacted and monitored. And last but not least, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. madam, I hope the signal from my end is not a problem. Hello. Yes, sir. You are. Your voice is not audible. ये सिग्नल कहाँ आ रहा है? Like, you are audible. Wait. Voice is not audible. You are totally audible. Yes, please don't disturb children. Should I continue? Sir, you are not Yes, clear. sir, yes. Yes, sir. You continue. That will be a network problem from their side. Okay. So as I said, the last one is the health.
So health has to be maintained. As we say, eat well and sleep well, because as we know, all the communicable disease, majority are viral infection. This COVID is also a viral infection, so your body should be having enough strength to fight with this virus. And with time, the virus, its infectivity goes down. So your body should be in good shape. So eat well, sleep well. Physical activity has to be reinforced. What happens is basically because kids are not going out or not meeting the people, so the physical activity has gone down. But I would advise that rather not going in crowded places, but still some amount of physical activity with your parents. Might be a badminton, might be some running or cycling. These still can be so physical activity. And specifically those children who are at high risk, considering there are children who might be asthmatic or those who are having diabetes or certain other issues, specific care has to be taken. All these measures should be taken. So in a nutshell, basically we have to हेलो सर. address. सर Yeah, प्लीज लिसन. सर अगर आप हिंदी में एक्सप्लेन कर देंगे ना तो ज़्यादातर पेरेंट्स सुन पाएंगे, क्योंकि sure, कुछ ही sure. पेरेंट्स समझ पा रहे हैं, मोस्टली Absolutely. नहीं समझ पा रहे हैं. तो प्लीज़ आप एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि कुछ एक ठीक है पेरेंट्स तो समझने की कोशिश तो कर रहे हैं पर अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं. ठीक तो प्लीज़ सर ठीक है. तो जैसे मैं एक्सप्लेन इन बता रहा हिंदी. था, जैसे मैं बता रहा था बेसिकली, मैडम, मैं स्टार्टिंग से पूरा ही आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ कि एक तो जैसे मैंने कहा था कि मास्क को अच्छे से पहनिए का. ठीक है, पूरी तरह से आपका मुंह और आपका जो चीन एरिया वो पूरा ढका हुआ होना चाहिए. फिर जो मास्क है उसको स्ट्रैप से पकड़ के फिर से निकालना है, स्ट्रैप से दोबारा करने की कोशिश करनी है. तो एक तरह से हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि हम मास्क को बार बार आगे से छू के कंटामिनेट ना करें, गंदा ना करें. तो दूसरी चीज जो मैंने बताई थी, हाथ धोना, के प्रॉपरली हाथ धोना जरूरी है. कम से कम 20 से 25 सेकंड के लिए हाथ धोना, उसके सारे सर्फेस क्लीन करना, उंगली क्लीन करना, नेल्स क्लीन करना जरूरी है. और थर्ड चीज जो है सेपरेशन, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना. कि कम से कम 6 फीट की दूरी बच्चों के बीच में रहे. ठीक है, बाहर आप पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हो तो 6 फीट की दूरी मेंटेन करने की कोशिश कीजिए. कि जिससे अगर इन केस बाई चांस कोई छींकता भी है या किसी भी तरीके का वायरस अगर आने की चांस भी होती है, कम से कम डिस्टेंस को मेंटेन करने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं. तो जैसे मैं कह रहा था, बेसिकली बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो बच्चे एक दूसरे के साथ ज़्यादा घुले मिले नहीं, ज़्यादा जैसे हाथ मिलाना होता है, गले लगना होता है, वो सारी चीज़ें अवॉइड करें. एक दूसरे की चीज़ें शेयर करना थोड़ा सा अवॉइड करें जिस टाइम पर, क्योंकि तो चांसेस कम है कि वायरस की जो शेयरिंग से ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह नहीं है इंडियन फूड ऑपरेशन की जैसे सामान पे या बाकी चीज़ों के बीच में रहना है. तो हमेशा अपने बच्चों के साथ एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ जैसे मास्क होना जरूरी है, तो सैनिटाइजर होना जरूरी है. तो ये सारी चीज़ें रखनी है. बाकी जैसे मैंने बताया, स्कूल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जब भी चीज शुरू होगी तो किस तरह से करें कि क्राउडिंग ना हो, बच्चे दूर बैठे एक दूसरे से. लंच ब्रेक में भी जो है कम्युनिटी, अगर बाई चांस किसी को फीवर है या किसी को तकलीफ है या ऐसा लगता है कि फीवर है, लॉस ऑफ स्मेल है, फेस सुगंध नहीं पता चल रही है, सुगंध की दिक्कत होती है, तो इन प्रैक्टिकली स्कूल में ना भेजा अपने बच्चे को घर पे रखे, उनको चेक करवाएं. और पेरेंट्स को भी बेसिकली सारी जो अच्छी आदतें हैं वो अपने बच्चों में डालने की कोशिश करनी पड़ेगी. जिस तरह से मास्क पहनना है या हाथ धोना है और कैसे मास्क रखना है, इसके पूरे ध्यान में रखें. तो ये सारी हैबिट्स जो हमें डालनी पड़ेगी. आखिरी जो मैंने कहा था बेसिकली हेल्दी हैबिट्स, बेसिकली अच्छे टाइम पर सोना, खाना पीना, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, भाग दौड़, भले ही बैडमिंटन हो, साइकिलिंग हो या कोई भी तरीके की एक्टिविटी हो, क्राउडेड प्लेस में अवॉइड करके करना शुरू करना है. और स्पेसिफिकली जो बच्चे, जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दमे की शिकायत है, डायबिटीज की शिकायत है, तो उनमें थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखें. तो बेसिकली ऑब्वियसली टाइम थोड़ा सा ऐसा नाजुक टाइम है कि जिसमें हमें बेसिकली ये सारी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए. अगर टाइम निकल जाए, होपफुली वैक्सीन आ जाएगी, या जैसे जैसे हम देख भी रहे हैं कि मतलब डिजीजेस हो भी रही हैं, बीमारी हो रही है, उसकी सिवियरिटी उतनी नहीं है. वो जितनी में हो रही है, अच्छी बात ये कि बच्चों को जो है डिजीज उतनी नहीं होगी और सिवियरिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसको इसकी अपनी एहतियात बरतना बहुत जरूरी है. तो मैडम ये बेसिकली इतना ही बोलना था. इसके अलावा भी जो है मैं क्वेश्चन आंसर देने के लिए रेडी हूँ. Yes. तो आप कुछ पूछना चाहेंगे? So I asked parents if they थैंक have यू any सर. if they have any query, आप लोग पूछ सकते हैं सर से.
सर इज वेरी मच देयर। तो अगर आप लोग को कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ रिव्यू तो आप सब पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चन एंड देन वी विल वाइंड अप द प्रोग्राम। तो पेरेंट्स प्लीज आस्क, किसी को कुछ पूछना है प्लीज आस्क द क्वेश्चन। There is a request. Please ask one by one. Don't unmute yourself all at once. One by one, you can ask your queries. Can I start? Yes, ma'am. Yes. Thank you so much for this information. And I have one question. Like which kind of masks are the best? किस तरह के मास्क हमारे लिए सबसे अच्छे हैं? सिंपल वाले जो वॉशेबल हैं या N95 या कुछ? मैडम इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट अगर हम प्रोटेक्शन में देखें तो सबसे पहले जो हम कहते हैं प्रोटेक्शन वो है N95। तो बेटर ये है अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है जो कई बार स्कूल के लिए प्रोमाइसिंग में अवेलेबल करना या मुश्किल हो सकता है तो अपने पर्सनल लेवल पे पेरेंट्स को अपने बच्चों को दे सकते हैं। N95 सबसे बेस्ट माना जाता है, इसमें 90 to 95% चांस है कि ट्रांसमिशन ना हो। ठीक है। द सेकेंड इज जो नॉर्मल सर्जिकल मास्क जो हम कहते हैं जो ब्लू कलर के आते हैं वो बेसिकली नॉर्मल सर्जिकल मास्क नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अराउंड 70-75% का। इवन दे आर गुड इनफ। उसमें भी हम ये कर सकते हैं कि भाई एक अगर एक बार हम हॉस्पिटल में भी वी वेयर 2 मास्क एट द सेम टाइम और इवन अ सिंगल मास्क इज सफिशिएंट अगर आपका फिजिकल सेपरेशन चाहिए। जो लीस्ट है वो है कपड़े वाले मास्क जो यूज करते हैं वो अराउंड 40 to 50% प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है। तो बेटर ये है कि आप सर्जिकल मास्क के बाकी मास्क प्रोवाइड करें। कपड़े वाले मास्क इसलिए बेटर है। लेकिन ये कहने के बाद मैं ये जरूर स्ट्रेस करना चाहूँगा कोई फर्क नहीं पड़ता अगर N95 मास्क में पहन रहा और अगर मैं अपना हाथ बार बार उसके फ्रंट पे टच कर रहा हूँ या उस मास्क को कॉन्टैमिनेट सर्विस कर रहा हूँ तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप बेसिकली प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ मास्क की। अगर आप एक फिजिकल सेपरेशन रखते हैं अच्छे से तो इवन कपड़े वाले मास्क दे कैन वर्क बट आई वुड स्टिल प्रेफर द बेस्ट प्रोटेक्शन इज विद N95। कोई और पेरेंट्स जो पूछना चाहते हैं कोई भी क्वेरी? नमस्कार। हाँ जी बोलिए प्लीज। हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार सर। सर मेरा ये प्रश्न ये है कि जो बच्चों के लिए लंच की बात की जा रही है कि बच्चों के जो हम लंच अगर करते हैं तो वो अकेले में और थोड़ा सा अपने आप को हाथ सैनिटाइज करके और फिर मास्क उतार करके लंच करें। तो मेरा एक सजेशन भी है और एक रिक्वेस्ट भी है, क्या ऐसा संभव है कि केवल कुछ समय के लिए स्कूल खोला जाए ताकि बच्चे लंच अपने घर पे करें या घर से करके आए, ताकि एक जो मास्क उतार करके उस समय वो पता नहीं वो हाइजीनिक कंडीशन क्या रहे, बच्चे कुछ लापरवाही कर जाए, कुछ उनका स्पून गिर जाए या जैसे भी हो, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से वो कंटेन करते हैं उस वायरस को। ये सजेशन बहुत ही वैलिड है। ये चीज़ मैं भी ये चीज़ कह रहा हूँ कि बेसिकली वो डिसीजन जो है वो इवेंचुअली पहले सबसे पहले गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होगी और उसके बाद जो है स्कूल की अपनी गाइडलाइन होगी जहाँ पर खुद जो है जब स्टार्ट जैसे स्कूल खुद जानते हैं इसीलिए पिछले 5-6 महीने से बेसिकली वो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं बिकॉज सेफ्टी उतनी नहीं थी इसलिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। तो वेन दे विल स्टार्ट ऑब्वियसली दे विल कंसिडर दैट वो इसे फेस मैनर में शुरू करें। आई थिंक जो टीचर्स हैं टीचर्स कैन टेक दिस क्वेश्चन कि हाउ दे विल टेक अबाउट इट। मुझे लगता है कि इसी तरह से फेस मैनर में होगा। हो सकता है इनिशियली लंच तक बच्चों को ना रुकाया जाए, माइट भी 3-4 घंटे की क्लास हो इस तरीके से बेसिकली लंच के टाइम पर बच्चे कर लेते हैं। बाकी मैडम टीचर्स आई वुड लाइक टू आस्क देम हाउ डू दे प्लान टू गो अबाउट। Yes, sir. We are still waiting for the guidelines to be given from the government. Obviously, it will not be means the full-fledged school for 2 hours or 3 hours, something like that. Government is also planning to do that way because they also know that during lunch time, children will not be able to maintain social distancing. So obviously, we are waiting for government guidelines. So school will also prepare their own guidelines. So we are also in that phase. We are still waiting. थैंक यू मैम, थैंक यू सर। मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका जो आपने मेरे को सजेस्ट किया। संग में एक बात और कहना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है
कि लोग अपनी कोई ड्यूटी नहीं फॉलो कर रहे हैं। मैं अगर कोई भी बच्चा मेरी बात सुन रहा हो और कोई पेरेंट भी मेरी बात सुन रहे हो, प्लीज 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 अपने बारे में सोचने के साथ साथ उन डॉक्टर्स के बारे में सोचिए, उन मेडिकल स्टाफ के बारे में सोचिए जो आप लोगों को सही करने के लिए रेगुलर लगे हुए हैं पिछले 7 महीने से। हम लोग थक गए हैं, लेकिन उनके बारे में सोचिए वो हमें सही करने में कितना थक गए होंगे। अगर उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर सोचिए आपका क्या होगा। प्लीज मास्क पहनिए और इस चेन को तोड़ने में मदद करिए, और सबसे जरूरी हमारे मेडिकल स्टाफ को और मेडिकल फैसिलिटी को कामयाब बनाइए। उन लोगों ने बहुत शहादतें दी हैं, हम सल्यूट करते हैं उन्हें। और मैं फिर कहूंगा प्लीज फॉलो द गाइडलाइन प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स। आपकी बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर सिर्फ फर्क ये कि हम रुकने को तैयार नहीं है कि हमें अपनी ड्यूटी जो है हमें करते रहनी है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पेरेंट्स की है, जो बच्चों की है, उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेयरिंग ऑफ मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करनी जरूरी है। प्रॉब्लम यही है कि हम क्रिटिसाइज सबसे पहले करते हैं। हम सबसे पहले ये कहते हैं कि ये चीज़ नहीं हो रही है, ये चीज़ नहीं हो रही है, भाई गवर्नमेंट मेट्रो शुरू कर रही है, गवर्नमेंट ये चीज़ शुरू कर रही है, लेकिन हम वो डिस्टेंसिंग खुद मेंटेन नहीं करना चाहते। मैंने खुद देखा कि अनफॉर्चुनेटली मेरे पास पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं तो किसी का मास्क आधा नीचे उतरा हुआ है। जब हमसे बात करते हैं तो मास्क, पेशेंट जो एडमिटेड है, जो हॉस्पिटल में एडमिटेड पेशेंट है, वो ढंग से मास्क नहीं पहन के रखते। तो ये चीज गवर्नमेंट बोल बोल के थक गई है, हम बोल बोल के थक गए हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। और एक सिंपल सा मेजर है जो इस डिजीज की रोकथाम में हेल्प करता है। इंसान चाहता है कि वैक्सीन बन जाए, सारी चीजें दवाइयाँ लेकिन जो कुछ चीजें करनी है वो करने के लिए तैयार नहीं। तो आई होप कि लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई थैंक ऑल द पेरेंट्स, बहुत अच्छे से आपकी मेडिकल सर क्या स्कूल बैग वगैरह भी वो करना पड़ेंगे सैनिटाइज डेली? मैडम नहीं, वो जरूरी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि वंस इन वाइल आप कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे हम लोग ये डिजीज प्रोग्रेस हुई है, हमें धीरे धीरे पता चला है कि जो चीज़ें हैं, जो वायरस है, वो बहुत ज़्यादा जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जैसे बैग हो गया या पेंसिल हो गई या पेंसिल बॉक्स हो गया, इनसे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है। तो स्टार्टिंग में जब शुरुआत हुई थी डिजीज में, हम इवन जो सब्जियां भी घर पे लेके आ रहे थे, सारी चीज़ें जो भी आ रही थी, उसको 12-24 घंटे तक बाहर रखते थे, उसको सर अच्छे क्या से स्कूल बैग वगैरह भी डेली जो है सैनिटाइज करना पड़ेंगे? मैडम वो जरूरत, इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको सैनिटाइज इतना नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज ये वायरस इतना लंबा नहीं टिकता। Sir, your voice is not clear. हेलो। Voice is proper, beta. Maybe a network issue from your side. Sir, हाँ, you are quite audible. You carry on. ओके। तो जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि बैग्स को जो है, बैग्स को सैनिटाइज मैंने देखा एक बार सुबह जब आ रहे हैं तो उस टाइम पर क्लीन करके भेजते हैं, पर बार बार भी जरूरी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ये वायरस बहुत ज़्यादा देर तक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पर नहीं टिकता है, ठीक है। तो उतना बहुत ज़्यादा हमें पैरानॉइड होने की जरूरत नहीं है, तो दिमाग में वहम रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जितना क्लीननेस रखेंगे उतना बेटर। सर, सर्जिकल मास्क को कितने टाइम तक यूज कर सकते हैं? बेटा प्रेफरेबली क्या होता है कि वैसे तो हम कहते हैं कि अराउंड आप 4 से 5 मिनट ही कर सकते हैं। अगर N95 है तो बेसिकली दैट यू कैन यूज फॉर 5 to 7 days, तो हम हॉस्पिटल में भी करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सर्जिकल मास्क यूज कर रहे हो तो आप एक दिन में एक चेंज करते हैं। प्रेफरेबल ये भी क्या होता है कि आप कई बार उस मास्क को टच करते हो, आगे से कभी इधर रखा जाता है, एंड सर्जिकल मास्क इतना एक्सपेंसिव नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक दिन में एक सर्जिकल मास्क यूज करके उसे डिस्कार्ड कीजिए, उसे धोने की कोशिश मत कीजिए, और बेटर हो कि उसको डिस्कार्ड करके नया मास्क लीजिए, ठीक है। Hello, sir. Hello. I would like. Hello. Hello, sir. Yes, ma'am. You can. Yes, ma'am. You Yes, ask. yes. Yes, ma'am. Madam, I have a query. Is it not harmful for a child to wear a mask 5 to 6 hours continuously in the school? मैम टू बी वेरी फ्रैंक, जो हम N95 और ये मास्क यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ हार्म नहीं होता अनलेस आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, जिस टाइम पे आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग में इशू हो सकता है। तो जैसे स्पोर्ट्स के टाइम पे हम कई बार कहते हैं कि भाई स्पोर्ट्स के टाइम पर जब आप हेवी ब्रीदिंग कर रहे हो उस टाइम पे यू माइट नॉट फील कंफर्टेबल। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि 30 डेज जब हम शुरुआत करेंगे, मुझे लगता नहीं है कि इतना ज़्यादा फोर्स हो पाएगा, क्योंकि एक तो हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके दूसरा हम इंजर्ड नहीं करना चाहिए।
तो इट्स अ नॉर्मल थिंग। हम एज ए मेडिकल प्रोफेशनल खुद भी हॉस्पिटल में पूरे दिन मास्क पहने रखते हैं। वो तो अभी इस टाइम पर अकेला हूँ, रूम में अकेले चेम्बर में बैठा हूँ, इसलिए मैंने मास्क उतारा हुआ है। नहीं तो हमारे मास्क कभी नहीं उतरते, और वो एक हैबिट सी होती है बेसिकली। वो तभी मैंने कहा कि बच्चा इसलिए नहीं पहन पाता है 5-6 घंटे, क्योंकि उसने घर पे प्रैक्टिस नहीं की। तो ये एज पेरेंट्स मैडम, आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को प्रैक्टिस कराए कि मास्क दिन में 2-3 घंटे, 3-4 घंटे पहने। तभी एक बार वो आदत में आएगा, फिर वो पहन लेंगे, नहीं तो फिर वो नहीं पहनेंगे। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो आप सडनली जिस दिन स्कूल खुलेगा या बाहर भेज दिया बच्चे को बोलेगा 5-4 घंटे के लिए मास्क पहन के रखो, डेफिनेटली नहीं पहनेंगे। तो एज अ प्रैक्टिस हमारे लिए वो जरूरी है कि वो हम घर से शुरुआत करें। थैंक यू सर। सर इसी के साथ साथ मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि हाउ टू मेंटेन द हैबिट ऑफ क्लीनिंग द मास्क बाय द किड्स देमसेल्व्स। क्या वो इतने कैपेबल हैं कि अपने मास्क की टेक केयर कर सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट इन अ हैबिट ऑफ वेयरिंग मास्क टू 4 to 5 hours. So how will they use the mask and about the cleaning also? तो क्लीनिंग में मैडम मैंने आपको बताया, अगर आप एक नॉर्मल सर्जिकल मास्क यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसे बेसिकली क्लीन करना है, अच्छे से डिस्कार्ड करना है। जब आप एक बार यूज कर लो, एक दिन के बाद फिर उसे यूज किया उसे डिस्कार्ड किया। सेकंड, मैंने अगेन मैं वही स्ट्रेस कर रहा हूँ कि वो मास्क वेयरिंग और वो जो अच्छी हैबिट्स है वो घर में शुरू करनी है। कि फ्रंट ऑफ द मास्क को टच नहीं करना है, सिर्फ स्टैप को टच करना है, स्टैप से रिमूव करना है, बाकी उसको क्लीन सरफेस पे रखना है। ये सारी हैबिट्स उनमें धीरे धीरे इनकलकेट करनी है। जब आज से 6 महीने पहले गवर्नमेंट ने लॉकडाउन शुरू किया था, हम खुद भी मास्क नहीं पहनते थे। कभी पब्लिक प्लेसेस में बिना मास्क के नहीं जाते थे, पूछे भी नहीं कि मैं मास्क पहन, क्योंकि वो हमारे हैबिट बन गई, वो हमारे अंदर इनकलकेट हुई। तो दैट हैबिट हैज टू बी इनकलकेटेड इन चिल्ड्रन। अगर एक क्लास में 60 बच्चे हैं तो सोशल कैसे हो सकती है उस क्लास में? एक क्लास में कितने बच्चे हैं सर? हेलो। सर One class is 67 students. हाँ, सर अगर इस तरह का मतलब कुछ है तो वो गाइडलाइंस तो गवर्नमेंट विल गिव कि दे विल कॉल 1/3 चिल्ड्रन एट अ टाइम, या तो वो 1/3 बुलाएंगे या 50% बुलाएंगे। ऑब्वियसली दैट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज द स्कूल। तो वो चीज़ अभी वी ऑल आर वेटिंग फॉर दैट गाइडलाइंस कि मे बी स्कूल विल कॉल 1/3 चिल्ड्रन एट अ टाइम। तो ऑब्वियसली दैट वाज वी ऑल आर वेटिंग, एक्सक्यूज मी वी सर, कांट टेल राइट नाउ। एक क्लास में अगर 60 बच्चे हैं तो वो सर वही सोशल कह रही डिस्टेंसिंग कैसे कायम हो सकती है? सर वही कह रही हूँ कौन सा वो तरीका है? 60 चिल्ड्रन है, तो सर ऐसा स्कूल को खुद भी गाइडलाइंस बनाएगा, गवर्नमेंट भी गाइडलाइंस देगी कि 1/3 बच्चे एक बार में आए, कि मे बी आप 3 days नेक्स्ट टर्म में कि एक बार आए, देन 20 मे बी 3 Excuse me, sir. स्कूल विल वर्क। यस तो सर वी आर Wait for a while. एक्सक्यूज मी Okay. सर, एक्सक्यूज मी सर, ये प्लीज अगर क्लास के अंदर 60 बच्चे ऑलरेडी हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे कायम हो सकती है, मेंटेन कैसे सर, होगी? सर सर आपको यही सर बता रही है जवाब मैम, एक बार सुनने की कोशिश कीजिए, मैम इज एक्सप्लेनिंग द सेम। एक बार आप सुनने की कोशिश तो कीजिए। सर ये गाइडलाइंस गवर्नमेंट भी देगी कि दे विल कॉल 1/3 ऑफ द चिल्ड्रन एट अ टाइम, यानी 1/3 बच्चे एक बार में आएंगे। 20 आए एक दिन एक सेक्शन के, नेक्स्ट 20 नेक्स्ट डे आए, नेक्स्ट 20 नेक्स्ट डे आए, तो आफ्टर 3 days के बाद टर्न पड़ेगा उस बच्चे का स्कूल में आने का। तो जिससे थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाएगी और थोड़ा सा क्राउड भी कम हो जाएगा, और मे बी स्कूल विल वर्क इन शिफ्ट। तो ये सब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएंगी, ये हम लोग खुद अपने आप से डिसाइड नहीं कर सकते अभी। लेट द गाइडलाइंस कम, अभी जिसका देन आप वी विल डिसाइड। वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं, ये तो हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। हाँ उनसे ये so now I think if there are any queries regarding this, you can ask. Otherwise, we will wind up the program because Dr. Bharadwaj is also having limited time for us, and he gave so much precious time. So we are really thankful to sir. So if there is any other queries, you all may ask. Otherwise, we'll wind up the program, and then Ma'am Neha will wrap up. Anybody wants to ask any of the Excuse questions? me, sir. Yes. यस प्लीज सर। Sir, can I prevent or treat coronavirus by using spray, liquid sanitizers, etc.? You can prevent, you can't treat, definitely there is no treatment using spray or sanitizer, but yes you can definitely prevent। क्योंकि जैसे मैंने बताया, अपना हैंड सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। हमारी क्या ये कि देखिए, अगर स्टैटिस्टिक्स देखा जाए, हमारी आदत है, जैसे मैं भी बात करते करते फ्लैश बैक
देखो खाली बार-बार जो है अपना हाथ कभी अपने नाक पे लेके जाते हैं, कभी आईज़ रब करते हैं, कभी माउथ को टच करते हैं। इसलिए हैंड सैनिटाइज़र बहुत ज़रूरी है और दिस विल हेल्प ग्रेटली। Okay, sir. Thank you so much. Okay, Neha ma'am. So now Anyone we else? will wind up the program because I have taken permission from sir for just 30 minutes only because I know Okay, his ma'am. time Okay, is ma'am. also going on. So now let us wind up the program. Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके मैडम, Okay, ma'am. थैंक Thanks, यू sir. सो मच। Thanks, थैंक्स ma'am. मैम, थैंक्स मैम, Thank you, थैंक sir. यू। Good Sir, morning, thank you, everyone. ma'am. Thank you, Thank sir. you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank Wait. you, sir. Thank you, sir. Wait, children, wait. Good morning, everyone. It is a privilege to have been asked to propose a vote of thanks on Yeah, this thank you, webinar. ma'am. It is a On behalf, wonderful program. on Yeah, we behalf got of very entire much Secretariat valuable family, language. Thank you, sir. I extend a very hearty thanks to the speaker, Dr. Arun Bharadwaj, for gracing your important work and sharing with us your findings and opinions today. As we all are facing loads of problems in this pandemic, no doubt, sir, the information provided by you is going to help us and our families in many ways. We have been fortunate enough to be backed by a team of very motivated and dedicated colleagues. I cannot thank everyone enough for their involvement and their willingness to take on the completion of this webinar beyond their comfort zones. And a very special thanks to parents also for giving their precious time. Thank you everyone and thanks again Doctor for giving your precious time to us. Thank you थैंक यू सो everyone. मच, it was my pleasure to Thank interact with you all so the much. students and Ma'am, it's a pleasure. It's our pleasure also, sir, that you have given your precious time to us. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am and sir. Thank you, ma'am. It was a pleasure to Thank you host so you. much, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, I sir. want to thank all of your parents and our renowned guests Thank you, and sir. who gave his precious time, who spared his time for this wonderful talk which we have. So we extend thanks to all the parents, to all the children who joined with us. Children, now you can leave the meeting. Thank you. Okay, ma'am. Thanks, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank Thank you, you. ma'am. Now, Okay, ma'am. Thank you, sir. Ma'am. uh, Thank you, Ramanand, ma'am. please wait. Thank you to those who Neha ma'am and Ramanand, please wait. I have a question to ask. Yes, ma'am, Yes. I'm waiting. Huh. Yes, ma'am, I'm waiting. Let children move out from the meeting, then I'll. Children, now you may leave Okay, the okay, ma'am. meeting. Ma'am, may I stay or leave? Children, please. You, yes, 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 ma'am.